वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो जो है, हम आपको रहीम खान के चिड़ियाघर में जो जानवर मौजूद हैं और जो जानवर मौजूद थे उनके बारे में बताएंगे। हमारे इस चिड़ियाघर में बहुत ही नायाब किस्म के जानवर अभी भी मौजूद हैं। तो हम आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको रहीम खान में मौजूद जानवरों के बारे में बता सकें और जो परिंदे यहाँ पर मौजूद हैं उनके बारे में भी दिखा सकें। तो हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, इस परिंदे को जो है वल्चर कहा जाता है, लेकिन आम ज़बान में, सराइकी ज़बान में इसे गेज के नाम से जाना जाता है। और इस परिंदे को भी नापैद होने के खदशात हैं, क्योंकि गोश्त की फ्राहमी जो है मुकम्मल तौर पर इसे फराहम नहीं की जाती। दोस्तों, पाकिस्तान में इस परिंदे को कूंज के नाम से जाना जाता है। ये भी परिंदों की नायाब नस्ल में से एक नस्ल जो कि पाकिस्तान में पाई जाती है। और इनको आपने देखा होगा कि एक दूसरे को अच्छी तरह फॉलो करते हैं। आपने इनको उड़ते हुए भी देखा होगा कि ये लाइन में उड़ते हैं और अपनी तरतीब बनाकर चलते हैं। दोस्तों, परिंदों की और इकसाम में से जो मशहूर इकसाम है जिसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ये बहुत सारे मुल्कों में नेशनल बर्ड भी है और ये अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत ही मशहूर है। दोस्तों, ये परिंदे की एक और किस्म है जो कि मुर्गियों से मिलती जुलती है और इसका बैक साइड जो है फ्रैंकलिन से मुशाबत रखता है। यहाँ पर हिरन और नील गाय भी मौजूद है।
मोर की आम इकसाम में से एक किस्म सफ़ेद मोर भी हैं। इनकी ब्रीडिंग भी रहीम खान के